Okay. So a very good evening to all of you. Okay. You all knows that it's your science class today. Yes, Vedansh and Aradhya. You know it's your maths, sorry, science class today. Yes. Yes, ma'am. Right. And today the topic is reproduction in animals. So can you tell me something about reproduction? What is reproduction in animals? Ma'am, reproduction means to produce babies. Yes, to produce babies. Very good. So we will discuss about it. Okay. Wait. I'm sharing the screen to you. Okay. Just wait a minute. It is showing. It is showing, beta. Yes or no? Tell me. Yes, Screen is showing to you. Okay. yes, ma'am. So the period of time for which a living organism lives is called lifespan. So our first topic is lifespan. What is lifespan? The period of time for which a living organism lives. Means like we all are human beings. You, I, right? We all are human beings. Okay. So what is the age of us? What is the age of us? Some of us are 60 years old. ठीक है, कोई 60 years तक जीता है, कोई 70 years तक जीता है, ठीक है, कोई 80 years तक जीता है, कोई 100 years तक भी करता है बेटा लाइफ स्पेन. ठीक है. So the time period, the period of time for which a living organism lives is called lifespan. ठीक है. तो जितने टाइम पीरियड के लिए कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई भी लिविंग क्या है, इंसेक्ट है, कोई एनिमल है, ह्यूमन बीइंग है, वो जितने टाइम के लिए भी लाइफ स्पेंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड द लाइफ स्पेन ऑफ देम. क्लियर है? इट इज क्लियर व्हाट इज लाइफ स्पेन? Yes, Aradhya, just tell me what is lifespan in your language. Reference means live मैम वो 100 years तक भी जीता है मैम 60 Life of मैम an, 70 okay, life of an animal, of an insect, okay, or a human being. All right. So second thing is reproduction. Our second topic is reproduction. So what is reproduction? Reproduction is the process by which living things produce more of their kinds. Okay. What is that? This is reproduction is the process by which living things produce more of their own kind. It means कि reproduction क्या है, कि ये ऐसी process है जिसमें क्या करते हैं, जो living things है, living things means if we are talking about the insects, ठीक है, अगर हम insects के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो insect क्या करते हैं, अपने जैसे और इंसान और अपने जैसे और बेबीज, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. अगर हम इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट अपने जैसे और इंसेक्ट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. ऑल राइट. सो एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन टू वेज. जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो टू वेज में रिप्रोड्यूस करते हैं. कौन कौन से टू वेज हैं? फर्स्ट, सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस लाइक द ह्यूमन बीइंग, राइट, एंड लाइक द डॉग ऑल्सो, लाइक द कैट ऑल्सो. वो क्या करते हैं, कैट है, डॉग है, काऊ है, हॉर्स है, दे डिडंट गिव एग्स. एग नहीं देते हैं ना वो क्या करते हैं, अपने जो यंग वंस होते हैं उनको बर्थ देते हैं. ठीक है, बर्थ देते हैं ना उन्हें. ह्यूमन बीइंग भी बर्थ देते हैं अपने जो यंग वंस होते हैं. ठीक है, एग्स नहीं होते हैं. बट सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग. कुछ कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग. कुछ कुछ क्या करते हैं, एग्स के थ्रू उनको प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, लाइक स्नेक, राइट, hen, hen also, right, and birds also, right. Any other example you can give me? मैम ostrich Ostrich, very good. Any other? Aradhya? Aradhya, unmute yourself first. Unmute yourself, baby. मैम dinosaur Yes. Okay. So now there are, it is written here that
viviparous animals. What is viviparous animals? The animals which give birth to their young ones are called viviparous animals. Example, deer, lion, and cow. The young babies of these animals feed on their mother milk till they learn to eat food, other food. Okay, such animals are called mammals. Viviparous animals या फिर mammals. What is called mammals? Which are mammals? Mammals ऐसे animals होते हैं, the animals which give birth to their young ones. Sorry, जो विविपेरस एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं? जो अपने जो यंग वंस है उनको बर्थ देते हैं, ठीक है, एग्स नहीं होते हैं, वो उन्हें बर्थ देते हैं, ठीक है, उनको विविपेरस एनिमल कहते हैं, ठीक है, लाइक डियर, लायन, काउ, okay, horse also, dog also, cat also, okay, and the young babies of these animals feed on their mother milk. उनके जो बेबीज होते हैं वो क्या करते हैं स्टार्टिंग में, जब तक वो खाना खाना नहीं सीखते हैं, लर्न हाउ टू ईट फूड, ओके, वो क्या करते हैं अपनी मदर के मिल्क पर सरवाइव करते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं, जो उनकी मतलब एनिमल्स के जो बेबीज होते हैं, उन्हें हम मैमल्स बोलते हैं. व्हाट वी कॉल देम? Mammals. This is written here in pink. Mammals. Can you see? Mammals. Yes, ma'am. Then second is oviparous animals. So first one was viviparous and second is oviparous. Okay, so what are oviparous animals? The animals which give birth to their young ones through eggs are called oviparous animals. Okay, तो क्या हो गया? जो एनिमल्स यंग वंस को बर्थ देते हैं दैट आर विविपेरस, एंड जो एग्स को बर्थ देते हैं, ठीक है, दैट आर ओविपेरस. क्लियर? क्लियर विच इज विविपेरस एंड विच इज ओविपेरस? Yes, क्लियर? ma'am. Okay. So next is according to the habitat, we can divide oviparous animals into three categories. First is aerial oviparous animals that are birds. Second is terrestrial oviparous animals that are insects and snakes. And third is aquatic oviparous animals that are fishes and frogs. There are three types of oviparous animals. Okay, first is birds, second is insects and snakes, and third is fishes and frogs. So, first the name of first one is aerial oviparous animal. Okay, second is terrestrial oviparous animal, and the third one is aquatic oviparous animal. Do you want to write it? Do you want to copy down or not? Tell me. You want to copy it down? Ma'am. Yes or no? Yes. Yes. Yes, ma'am. If you want to copy Yes, it down, ma'am. just copy it down. Take your time. Vedansh, you beta, you want to copy it? Yes, ma'am. I can copy it. Okay, just please take your time and copy it. So you can write according to habitat, we can divide oviparous animals into three categories. All right. First is aerial oviparous animals that are birds. Okay. Then second is terrestrial oviparous animals that are insects and snakes. And third one or the last one is aquatic oviparous animals that are fishes and frogs. Okay. Copy it down. Do it fast. You can also write the name only. All right. Just write down the name. Aerial oviparous. Don't write animals. You can write it down in another time. Okay. Aerial oviparous, birds. Terrestrial oviparous, insects and snake. Aquatic oviparous, fishes and frogs. Okay. These are the types of oviparous only, not viviparous. Okay. The animals only which give produce their young ones by eggs. Okay. ये सिर्फ उनका है, उनके हैं टाइप्स जो एग्स देते हैं यंग वंस को, बाय दे प्रोड्यूस देयर यंग वंस बाय एग्स ओनली. ओके, डन. No, ma'am. ओके, डू इट, डू इट.
Done, Radhya? No, ma'am. Okay, do it fast, baby. I have done. Okay, done. Okay, baby. Ma'am, done. Okay. So now we will move to the definitions of these three. Okay. First is aerial oviparous animal. Second is terrestrial, and third is aquatic. So we will discuss about the definitions of it. What are these works? How they work? Okay. So first one is the birds such as hen, crow, and parrot lay eggs. You know, hen, crow, and parrot lay eggs. You know, they bear their Yes, young ma'am. in hard-shelled eggs which hatch after some time. So what they did? They bear their young ones in hard-shelled eggs which hatch after some time. क्या होता है? वो जो अपने young ones है उनको hard shell जो eggs होते हैं उनके shells कैसे होते हैं? Hard होते हैं. Hard होते हैं ना? ठीक है? उसमें वो क्या करते हैं? उनको produce करते हैं. After that वो क्या हो जाते हैं? Hatch हो जाते हैं. Hatch means टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं. ठीक है? और आफ्टर ब्रेकिंग उसमें से यंग वंस बाहर आ जाते हैं. ठीक है? Adult birds sit on the eggs for a few days to keep them warm till they hatch. Adult birds क्या करती हैं? उनके ऊपर बैठती हैं एग्स के ऊपर. ठीक है? कुछ दिन के लिए. to keep them warm, उनको गर्म करने के लिए. वो गर्मी से टूटते हैं. ठीक है? जो एग्स होते हैं वो किससे टूटते हैं? गर्मी से टूटते हैं. ठीक है? Ma'am, This is called as incubation. This process is called incubation. So what is incubation? When adult birds sit on the eggs for a few days to keep them warm till they hatch. This is called incubation. Right? What is yes, incubation? You understood what is incubation? The process yes, of yes, hatching the eggs. Okay? The process of hatching the eggs. है ना egg उसमें. So you can say the process of hatching the eggs is called, what is this called? Tell me. Incubation. All right. All yes, right. So you can see here. This is a egg. This is an egg. You can see oval shape here. Can you see this oval shape here? This is egg. Okay. And this outer part is called shell. yes, ma'am. This outer part is called shell. Okay. Then this one is yolk. Okay. This one is outer membrane. This is air cell. यहाँ से क्या होती है? Air जाती है cells में. Okay. This is inner membrane. And this is albumin egg whites. आपने कभी egg boiled egg देखा है? Boiled egg देखा है आपने? हाँ, Ma'am, देखा है. जब आप एग को बॉईल करके उसको ब्रेक करते हैं तो जो बाहर वाली उसकी आउटर लेयर होती है दैट इज शेल. व्हाइट लेयर होती है दैट इज शेल. जब आप उस लेयर को रिमूव करते हैं तो बेटा उसमें एक बिल्कुल पतली सी, बिल्कुल जैसे आपने अनियन में देखा होगा, जो अनियन की टू वो होती है ना, लीव्स होती हैं. ठीक है? जो अनियन, जब हम अनियन को कट करते हैं, ठीक है, तो उसकी जो टू लीव्स होती है उसके बीच में आप एक पतला सा, बिल्कुल पतला सा एक पार्ट होता है उसमें. ठीक है? उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसे? मेम्ब्रेन. ठीक है? तो वैसे ही एग में भी होता है. उसकी एक आउटर लेयर होती है. ठीक है? बहुत पतली सी होती है वो. हम उसे भी एग से, जब हम बॉईल करते हैं एग को फॉर ईटिंग, तो हम उसे क्या करते हैं? उसे रिमूव कर देते हैं. ठीक है? दैट इज आउटर मेम्ब्रेन. उसके बाद जब आपने देखा होगा, जो ये वाली साइड होती है ना एग की, नीचे वाली डाउन वाली साइड, जब हम उसे बॉईल करते हैं तो उसमें ऐसी सी शेप आती है, लाइक दिस. ठीक है? ये कभी भी नीचे से राउंड शेप नहीं होता है एग. होते हैं राउंड, होते हैं स्टेबल, होते हैं नहीं, कुछ इस टाइप से होता है. ठीक है? तो ये क्या होते हैं? एयर सेल. मतलब कि जो एग होता है, ठीक है, और जो उसके अंदर के पार्ट्स होते हैं उनके बीच में जो सेल्स होते हैं एयर पास ऑन करने के लिए. ठीक है? वो वाला स्पेस होता है वो. ठीक है? दैट इज इनर मेम्ब्रेन. एंड दिस इज एग वाइट. एग वाइट देखा है? जो व्हाइट वाला पार्ट बॉईल होके आपके हैंड में आता है, दैट इज एग वाइट. और
और जो येलो वाला पार्ट अंदर होता है मिड में, दैट इज योक, दिस वन इज दैट योक। ओके, एग योक बोलते हैं उसे। ओके, क्लियर टिल हियर? क्लियर है? आगे बढ़ो। Yes. आई विल मूव फर्दर। ओके, सो terrestrial oviparous animals. So first was aerial oviparous. Okay, and second is, wait, terrestrial oviparous animals. What are they? Insects reproduce by laying eggs. Insect eggs are deposited by adult insects in a safe location. Insect क्या करते हैं? अपने जो egg reproduce करते हैं वो किससे करते हैं? हाँ, रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग। वो एग दे करके रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स आर डिपॉजिटेड बाय एडल्ट इंसेक्ट इन अ सेफ लोकेशन। जो एग होते हैं ना, वो इंसेक्ट के द्वारा क्या करते हैं, सेफ लोकेशन में छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, पुट ऑन कर दिए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे वो सेफ हो, किसी के पैरों के नीचे ना आ जाए एग। ठीक है, सेफ लोकेशन। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोच। ओके, यू ऑल सी कॉकरोच, आपने देखा है? कॉकरोच कैसा होता है? ब्राउन कलर का, छोटा सा, उसके आगे दो क्या होती है? हम्म, क्या होते हैं? लाइक दिस, बड़े बड़े से। व्हाट इज दिस? क्या है ये? टेल मी। हम्म, हम कॉकरोच। कॉकरोच की ये क्या होती है आगे, बड़ी बड़ी सी? व्हाट इज दैट? हम्म, मैम टेल मी। मेरे को याद। हाँ, याद नहीं आ रहा है? याद करो। हम्म, मैम एंटीना। यस, दिस इज एंटीना। एग। ओके, दिस इज नाइम, एंड देन कॉकरोच। पहले एग होता है, एग से नाइम्फ बनता है, जो एग से थोड़ा सा बड़ा होता है जब कॉकरोच। ठीक है, जब वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसको नाइम्फ बोलते हैं। व्हाट इज दैट कॉल्ड? नाइम्फ। ओके, एंड देन कॉकरोच। ओके, देन वी प्रोड्यूस कॉकरोच। ओके, देन लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। हाउ इट इज? दीज आर एग्स। बटरफ्लाई होती है, ठीक है, बटरफ्लाई ले देयर एग्स ऑन द लीव। ओके, देन फ्रॉम लीव्स इट विल बी हेयर। ओके, एंड देन इट विल बी प्रोड्यूस टू कैटरपिलर और लार्वा। इसे क्या बोलते हैं? लार्वा और कैटरपिलर। ओके, देन इट विल बी प्यूपा। इससे क्या प्रोड्यूस होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल एग्स, एग्स देन लार्वा और फिर कैटरपिलर। ओके, देन आफ्टर इट प्यूपा, एंड देन बटरफ्लाई। आफ्टर प्यूपा इट विल बी बटरफ्लाई। ओके, जैसे हम बड़े होते हैं ना, पहले स्मॉल बेबी होता है, स्मॉल बेबी से धीरे धीरे हमारे हैंड्स भी बड़े होते हैं, हमारा फेस भी बड़ा होता है, बॉडी। जब हम सबसे छोटे होते हैं, स्मॉल बेबी होता है, ठीक है, ही कांट मूव प्रॉपरली, वो अपनी जगह से हिल नहीं पाता है, राइट? फिर धीरे धीरे वो अपनी जगह से मूव करना सीखता है, फिर वो उल्टा होना सीखता है, देन ही स्टार्ट, वो घसीटना सीखता है आगे से अपने हैंड्स और लेग्स दोनों के, उस पे वो चलना सीखता है, उसके बाद वो खड़े होना सीखता है, देन ही स्टार्ट वॉकिंग। ओके, लाइक दैट, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। सबसे पहले एग्स होते हैं, वो सबसे छोटे हैं, देन कैटरपिलर है, ठीक है, उससे थोड़ा से बड़े जब होते हैं, दैट इज कैटरपिलर, जब वो प्रोड्यूस होने लगते हैं, देन दे बिकम प्यूपा, एंड देन दे बिकम बटरफ्लाई। ओके, क्लियर? मैम बटरफ्लाई और एंटीना। Yes. मैम बटरफ्लाई ऑल्सो हैव एंटीना। Yes, it also have antenna. Okay, so stage one, the egg. It all starts when a female butterfly lays her egg, usually on leaves or stems of plants. Inside these tiny eggs, caterpillar grows. So what will happen? It all starts when a female butterfly lays her egg. जो सबसे पहले क्या होता है? फीमेल बटरफ्लाई लेज हर एग, वो अपने एग्स ले करती है, ठीक है, यूजुअली ऑन लीव्स और स्टेम ऑफ अ प्लांट। यूजुअली क्या होता है, वैसे तो वो लीव्स पे ही करती है, ठीक है, ले करती है, या फिर इट विल बी ऑन स्टेम ऑफ प्लांट। Okay, inside these tiny eggs caterpillar grows. So inside these tiny eggs, inside the shells of these tiny eggs, caterpillar grows. This is caterpillar, it grows inside the eggs. Okay, it grows
inside these eggs. Okay. Then second stage is the caterpillar. The caterpillar leaves its egg home and enters the big outside world. Okay. So what caterpillar do? Caterpillar leaves its egg home. यहीं पर छोड़ देता है eggs को. Okay. And enters the big outside world. All right. Then the third stage is the pupa. The caterpillar forms itself into a pupa, a kind of vessel in which the caterpillar changes into butterfly. So now after the caterpillar, it will be pupa. The stage 3 is pupa. Okay, it changes the caterpillar into a butterfly. It is helpful in changing the caterpillar into butterfly. Okay, and the last stage is butterfly. Once the butterfly is ready to emerge, the case around the pupa spills open. Okay, this is pupa. Okay, जब इसके inside it, जब बटरफ्लाई क्या होती है, रेडी हो जाती है इमर्ज होने के लिए, बटरफ्लाई पूरी क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है. सो क्या होता है, ये जो इसके प्यूपा है ना, इसकी जो बाहर की जो ये शेल है, ये यही छूट जाती है, इसमें से बटरफ्लाई बाहर आ जाती है. ओके, सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई. ऑल राइट, इट इज क्लियर? क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. Can I move further? Yes. Okay. So now the third type of oviparous animals are aquatic oviparous animals. Okay. So first type first. What was the first type of oviparous animal? Vedansh. Hmm? Vedansh Rathore, tell me. What was the first type of oviparous animal? Ma'am, example. No, beta. There are three types of oviparous animals now. First was Yes, sir. Ma'am, first was terrestrial. Ma'am, aerial. terrestrial oviparous. Aerial oviparous. Second was Terrestrial. terrestrial. Right. And it is third one. Third one is aquatic oviparous. All right. Yes, Okay. ma'am. So aquatic oviparous animals are the animals that live in water. Example, fish and frogs. So the animals that live in water, that are called aquatic oviparous. Okay. And now this is about fish. Breed in a number of ways. Most fish release thousands of eggs, scattering them in the water where the male fish fertilize them. The eggs develop and hatch into larvae, baby fish, without any help from the parents. Most larvae are eaten by other creatures, but a few survive to become adults. So what will happen in fish breed? What is this? Breed in a number of ways. Most fish release thousand of eggs. बहुत सारे fishes क्या होती हैं जो thousand of eggs क्या करती हैं, release करती हैं. Okay, scattering them in the water where the male fish fertilize them. ठीक है, वो क्या करती हैं, जो उनके eggs होते हैं वो water में क्या होते हैं, फैल जाते हैं, scatter हो जाते हैं. ठीक है, and where the male fish fertilize them, जो male fish होती है वो उन्हें fertilize करती है. The eggs develop and hatch into larvae without any help from the parents. Because why it is written here? Because in terrestrial animals, what will happen? Sorry, in aerial animals, what will happen? Aerial animals में क्या होते हैं, जो birds होती हैं, उनके egg को bird क्या करती है, उनको hot करती है ना, warm, उनके ऊपर बैठती है. I told you. The Yes, bird ma'am. sit on them. Okay, for giving them warmth. Okay, but in fish, what will happen? The eggs develop and hatch into larvae without any help from the parents. इसमें parents की कोई help नहीं होती है. ठीक है, fishes में अपने आप ही वो लोग वो क्या होते हैं, fertilize हो जाते हैं. Okay, अपने आप क्या हो जाते हैं, hatch हो जाते हैं और baby fish बन जाती है. Most larvae are eaten by other creatures, but a Your few. voice is not. Ma'am, Yes. ma'am, your voice is not visible to me. Okay, okay, wait. Hello, my voice is coming now. Yes, Hello. ma'am. Now it's audible. Okay. So Yes, ma'am. It's audible. okay. But a few survive to become adults. क्या होता है, मोस्ट लार्वा किसके, अदर क्रिएचर्स से क्या कर लिए जाते हैं, ईट कर लिए जाते हैं,
but a few survive to become adults. Okay, so now I want to show you a video. Do you want to see the video? Yes, video about Yes, it. ma'am. Okay. Look at these pictures of animals and their young ones. A dog gives birth to cute little puppies. A lion has cubs. And a bird has little chicks. You too were a little baby when you were born, weren't you? Reproduction. All animals have the ability to produce more of their own kind, mainly by laying eggs or by giving birth to young ones. Voice is coming. Okay. This is called reproduction. Let us learn something more about reproduction in animals. Animals that lay eggs. Some insects like butterflies, amphibians like frogs, most fish, reptiles like lizards, turtles and snakes, and all birds reproduce by laying eggs. Egg-laying animals are also called oviparous animals. In some cases, the mother bird sits on the eggs to provide them warmth. Once fully developed, the little chicks break open the eggshell and come out. This process is called hatching. Birds. I told you hatching, right? I told you the hatching of birds. Yes, ma'am. Most birds lay eggs in nests. Eggs are generally oval, but may differ in shape, size and color. How does an egg look? The eggshell, which has a white jelly-like substance below it, called the albumen. The albumen is rich in protein. The yellow inner part of the egg is the yolk. Egg yolk is rich in fats, vitamins and minerals. It provides nourishment to the developing baby, also called the embryo. The embryo develops into a chick. The different stages of development of an animal from the embryo stage up to the adult stage form its life cycle. A mother hen is said to turn over her egg about 50 times per day so that the yolk won't stick to the sides of the shell. Amphibians. Some animals like frogs and salamanders can live in water as well as on land. These animals are known as amphibians. The name amphibian is derived from the Greek word amphibios, meaning living a double life. Life cycle of a frog. The female frog lays eggs in large clusters called spawns. When the eggs hatch, small tadpoles come out of it. These look more like fish at this stage. A tadpole undergoes several changes, such as it grows legs and loses its tail before it becomes an adult. Insects. Insects like cockroaches, houseflies, and butterflies lay eggs. Most insects show 4 stages of development: egg, larva, pupa, and adult. Butterflies and houseflies go through 4 stages of development, whereas cockroaches go through only 3. Life cycle of a butterfly. Let us study the life cycle of a butterfly. The adult butterfly
lays eggs on the lower side of leaves. The young one that comes out does not resemble a butterfly at all. Instead, it looks like a worm. This worm is called larva or caterpillar. The caterpillar feeds continuously on the leaves and grows rapidly. After some days, it stops eating and starts building a covering called cocoon around itself. This is called pupa stage. The larva keeps growing inside the cocoon and emerges as a butterfly after breaking open the covering. Life cycle of a cockroach. Cockroaches go through 3 stages during their life cycle: the egg, the nymph, and the adult. The baby cockroaches that hatch out of the eggs are called nymphs. They do not have wings. Newly hatched nymphs are white in color and gradually turn brown. They shed their skin several times before becoming an adult. The shedding of old skin is called molting. It is only after molting several times that a nymph becomes an adult cockroach. Reptiles. How do reptiles reproduce? Reptiles are crawling animals. Some commonly known reptiles include lizards, snakes, crocodiles, alligators, turtles, tortoises, etc. Most reptiles lay eggs on the ground but generally do not hatch them. The warmth of the sand or soil helps the baby growing inside the egg to develop and hatch. The female remains near the nest to protect the eggs and to lead the newly hatched babies to the water. Crocodiles and tortoises lay hard-shelled eggs similar to birds' eggs. Turtles, snakes, and most lizards lay eggs with soft leathery shells. Fish. Aquatic life includes fish as well as other forms of animals that live in water. Although fish lay thousands of eggs at a time, many get eaten by bigger fish with a few hundred surviving. There are about 129 kinds of aquatic animals that do not lay eggs but give birth to their young ones. Most common ones are whales, dolphins,